माथा खराब हो गया मेरा। चलो, तो हम लोग क्या क्या कर लिए थे बता जरा। कहाँ तक बोनस हो शेयर गया? हो गया था। बोनस शुरू हो गया था। ओके। बोनस कंप्लीट। हाँ। बस। ठीक है, so we'll start the next topic. ठीक है, my audio is clear? यस सर। Just give me a minute. Sorry in advance, sorry. चलो नेक्स्ट लिखो, ये हेडिंग नेक्स्ट, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में चेंज कैसे आता है, क्या ऑल्टरेशन हो सकता है? व्हाट आर द ऑल्टरेशंस इन शेयर कैपिटल? तो ऑल्टरेशन क्या होता है कि सपोज फर्स्ट कंपनी इशूड शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मान लो कंपनी ने पहले 100 ईच का शेयर इशू किया, ठीक है। अब वो कंपनी इसको चेंज करके 10 ईच का करना चाहती है, मतलब नंबर ऑफ शेयर बढ़ा रही है। मतलब पहले कंपनी क्या था, 500 शेयर इशू किया था, ठीक है, जो 100 ईच का था। अब कंपनी इसको 5,000 शेयर करना चाह रही है बाय डिडक्टिंग द नंबर फेस वैल्यू, ठीक है। तो पहले 100 के साथ क्या करेंगे सर, ₹10 ईच, तो उसको बोलते हैं ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। तो लिखो एज पर सेक्शन 94, as per section 94 of the Companies Act, as per section 94 of the Companies Act, a limited company having a share capital if so authorized by the articles, if so authorized by the articles, can alter its share capital, can alter its share capital, can alter its share capital for the following purpose, for the following purpose. Point number 1,
to increase the amount of share capital by issuing new shares. By issuing new shares. ठीक है, अगर कंपनी चाहती है कि हम अपना कैपिटल इंक्रीज करें, तो फॉर दैट पर्पस कंपनी कैन इशू न्यू शेयर्स और फ्रेश शेयर. राइट, द सेकंड पॉइंट. to consolidate to con हाँ, consolidate and divide all or any of the shares. अब जी अटक क्यों गया है? all or Sir, to consolidate and divide. to consolidate and divide any or all of its share capital into shares of larger amount than its existing shares. इस पॉइंट का मतलब क्या हो गया? यानी कंपनी कभी क्या करती है, शेयर को कंसोलिडेट कर दे. ठीक है, कि अगर मान लो 10 का 10 शेयर है, ठीक है, तो कंपनी उसको मिला के सर 1 का 100 शेयर कर देगी. ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, एक शेयर का वैल्यू अब क्या हो गया, ज्यादा हो गया. तो इस पर्पस के लिए कभी कभी कंपनी क्या करती है, शेयर्स को कंसोलिडेट करती है एंड समटाइम इट डिवाइड्स द शेयर. ठीक है, राइट. द नेक्स्ट पॉइंट. Convert all or any of its fully paid up shares in stock in stock ठीक है, जब शेयर्स आर इन सिंगल यूनिट, जैसे एक शेयर है, ठीक है, जिसको हम लोग शेयर्स बोलते हैं, लेकिन Fully paid up shares in stock के बाद क्या होगा? क्लास आई एम ऑडिबल ना? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो हम क्या बताए थे कि जब शेयर जो होते हैं वो सिंगल यूनिट में होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल, तो दो दे आर नोन एज शेयर. ठीक है, बट जब एक शेयर का लॉट होता है सर, ठीक है, 10 शेयर का, 20 शेयर का, 50 शेयर का, 100 शेयर का, तो दैट इज नोन एज स्टॉक. ठीक है, तो द लॉट ऑफ शेयर इज नोन एज व्हाट, स्टॉक. तो कंपनी चाहे तो शेयर्स को
Sir, fourth number point. Fourth, cancel shares which have not been taken or agreed to be taken by any person. Cancel shares which have not been taken or agreed to be taken by any person and diminish the amount of its share capital by the amount of shares so cancelled ठीक है। मतलब अगर कंपनी का कुछ शेयर अनसोल्ड रह गया, नहीं बिका है सर, उसको कोई खरीदने वाला नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी सर कि उसका जो शेयर कैपिटल है उसमें से उतने शेयर्स का अमाउंट घटा के दिखा सकती है। ठीक है, सो दीज ऑल आर ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, अब नेक्स्ट राइट ऑडिटर्स ड्यूटी। ऑडिटर ड्यूटी क्या होगा रिगार्डिंग ऑल्टरेशन शेयर कैपिटल? ड्यूटी ऑफ ऑडिटर regarding alteration of share capital. Duty of auditor regarding alteration of share capital. Number one, right, the auditor should see that the auditor should see that the alteration is authorized by the articles of association of the company. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। He should see that all the legal provisions have been duly complied with. You should see that all the legal provisions have been duly complied with. ठीक है, और क्या हो सकता है बताओ?
कोई बोलेगा कुछ? आशुतोष, अभिषेक, अभिजीत, उत्सव, जल्दी। Sir, minute book of directors. वेरी गुड, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। He should inspect the shareholders minute book. He should inspect the auditor's minute book. Auditors या shareholders? Sorry, shareholders minute book to ensure that the alteration was passed. To ensure that the alteration was passed in the annual journal meeting. That the alteration was passed in the annual journal meeting. इसका पार्ट वाला पॉइंट बोले। हाँ बोलो। सर इसका कैश जर्नल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक होगा कि वो क्या क्या किया है और क्या ऑल्टरेशन दिया है। नहीं, जैसे बोनस ऑफ शेयर दिया है तब बोनस का इशू होगा। वो आपका मिनट बुक से काम हो जाएगा। उसके हम लोग यूज करेंगे शेयर ब्लेजर का लिस्ट ऑफ मेंबर्स को, ठीक है। बिकॉज जिनका कैपिटल कम किया जाएगा, जिनका शेयर कम किया जाएगा, दे विल बी इन्फॉर्म, या उन लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा, नोटिस जाएगा, ठीक है। तो ऑडिटर से भी चेक कर सकता है। सो राइट द नेक्स्ट पॉइंट, he should check that whether that alteration has been properly effected in share ledger and There has register of been members. Properly effected in shares ledger and register of the members. Utsav, turn on the camera. सर ऑन है मेरा। तो तुम दिख नहीं रहा था हमको। अच्छा अभी दिख गया। Shares ledger. क्या बताए थे? You should check whether the alteration has been properly effected in share ledger and register of members. Done? अब नेक्स्ट एंट्री बताओ। इसके बाद कोई और क्या हो सकता है? और कोई पॉइंट? अभी हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट वाला पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। सो राइट, you should see that whether proper accounting procedure has been followed or not. Done? और लास्ट पॉइंट लिख लीजिए,
he should see that the altered share capital, he should see that the altered share capital is properly accounted in the balance sheet. सर अल्टर्ड के You बाद should see, but I should see that the altered share capital is properly accounted in the balance sheet. बैलेंस शीट में उसको हम दिखाए हैं सर. Is it clear? Yes, sir. चलो एक बार रीडिंग दो जल्दी से और कोई डाउट तो पूछ लो. जैसे हम कहें रिजर्व Sir. कैपिटल. सर ऑडिटर ड्यूटीज का सेकंड पॉइंट बोलिएगा. ऑडिटर ड्यूटीज का सेकंड पॉइंट. यस सर. You should see that all the legal provisions have been duly complied with. कि जितने भी कानूनी दाव पेच है, जो भी प्रोविजंस है, उनको फॉलो किया गया है. डन. कोई डाउट? सर कैसे पढ़ रहे हैं? पीयूष, रोहित, आकाश, एनी डाउट्स? आवाज जा रहा है मेरा? क्लास आई एम ऑडिबल? क्लास हाँ 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 Yes, हाँ sir, हाँ yes, हाँ. sir. बोलो, डाउट है कि नहीं? चला सब. सर अभी तो पढ़ रहे हैं. बोले. अच्छा पढ़ रहा है, ठीक है. बोलना चाहिए पढ़ रहे हैं. हम बोला आवाज सब नहीं आ बोले रही थे. सब बोले थे. चलो सर थर्ड पॉइंट बता दीजिए अल्टरेशन का. थर्ड पॉइंट ऑडिटर ड्यूटी का, ऑल्टरेशन का. अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल का. कन्वर्ट ऑल और ऑफ इट्स फुल्ली पुट शेयर्स. यस सर. उसमें क्या होता है, जैसे जनरली क्या होता है, शेयर जब वन होता है ना, एक या दो होता है, तो उसको हम शेयर बोलते हैं. मतलब जब वो कंसोलिडेटेड नहीं हो. लेकिन अब वही शेयर लॉट में बिके, ठीक है ना. कि एक लॉट है 500 का, मतलब उसमें 500 शेयर है. तो उस लॉट को हम लोग ना उत्सव सॉरी आप तो स्टॉक बोलते हैं. इट इज नोन एज स्टॉक. ठीक है. बंडल ऑफ शेयर क्या बोलेंगे हम लोग? स्टॉक बोलेंगे. वही चीज बोल रहा है. और लास्ट वाला फोर्थ नंबर. फर्स्ट नंबर ये था कि अगर मान लो कोई शेयर नहीं बिका सर, ठीक है, बिका ही नहीं, कोई उसको खरीदने को तैयार नहीं है, तो आप तो अथॉराइजेशन उसको दिखा दिए होंगे, तो आप उसको अपने कैपिटल से लेस कर दोगे. दैट मच शेयर हैज नॉट बीन सोल्ड बाय द कंपनी. डन सर. अभिषेक, प्रिया, राजवी, Yes, sir. कंप्लीट. कंप्लीट. आजकल वेदर क्लास का नहीं आ रहा. जब पता करो तो रेत कहाँ गया है? एक ही बार सब चलो. आएगा ऑफलाइन में बस. एक ही बार सब आएगा ऑफलाइन में. ये भी ठीक है. नेक्स्ट दो, रिजर्व कैपिटल. नेक्स्ट हेडिंग इज योर रिजर्व कैपिटल. अब क्या आप लोग बता सकते हैं रिजर्व कैपिटल क्या होता है? Anyone of you, what is reserve capital?
अभिषेक बताएगा, बताओ अभिषेक। हाँ मैं बताऊं। तो अभिषेक बताओ व्हाट इज रिजर्व कैपिटल। जो कैपिटल को रिजर्व किया जाए तो उसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं, रिजर्व वाह कैपिटल वाह कहते हैं। वाह रे मेरा, वाह रे मेरे होशियार चंद, वाह गजब, अब हम बोले अनकॉल क्या कैपिटल इज जवाब दिया रिजर्व अभिषेक। कैपिटल। सर सर जो थैंक यू सर। प्रॉफिट से निकाला जाता है उसी को ना बोलते हैं। नहीं वो नहीं कैपिटल नहीं रिजर्व होता उत्सव, है। वो उत्सव कैपिटल सर दैट तो इज बताया कैपिटल रिजर्व। ध्यान, हाँ सर हम बोले ध्यान ना सुनो। रिजर्व कैपिटल उसे कहा जाता है जब अनकॉल हाँ कैपिटल होता हाँ ठीक है, देखो ध्यान समझ लो, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल बताओ सब, ठीक है। कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी बचा के रखती है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। और रिजर्व कैपिटल वो हिस्सा होता है कैपिटल का जो कंपनी कॉल नहीं करती है सर, कंपनी इज नॉट कॉल इट। कंपनी उसको बचा के रखी है कि व्हेन कंपनी विल गेट इन लिक्विडेशन, जब कंपनी लिक्विडेट होगा तो हम क्या करेंगे, उस समय कॉल करेंगे। सो रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ योर कैपिटल, but capital is the part of your profit. Okay, so right. ये आप बता चुके थे, हाँ अब फिर भी तुमने नहीं बताया। हमसे कहाँ पूछा। सर उस टाइम बोला क्या मजाक नहीं कर रहे थे, तो? पता था सर, पता था मजाक कर रहे थे। चलो लिखो, रिजर्व कैपिटल इज दैट कैपिटल reserve capital is that capital which is called up, which is called up either taking place of any certain event, either taking place of any certain event or at the time of liquidation of company, or at the time of liquidation of company। मतलब सर ये कैपिटल का वो हिस्सा है जो कंपनी कॉल नहीं करती, अपने पास बचा कर रखती है कि किसी खास परिस्थिति में इसको बुलाया जाएगा, इससे पैसा रेज किया जाएगा, या जब कंपनी बंद होने वाली है सर तो उस टाइम में हमको पैसे की जरूरत पड़ेगा। एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू रेज मनी फ्रॉम दिस कैपिटल। क्लियर है बात? हाँ सर। चलिए, सो राइट, ऑडिटर्स ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ रिजर्व कैपिटल। फिर से बोलिएगा। ऑडिटर्स ड्यूटी in respect of reserve capital। ऑडिटर का क्या क्या ड्यूटी है? ठीक है, सो वेरी फर्स्ट पॉइंट, the auditor should check, the auditor should check that whether company has सर आवाज नहीं आ रहा आपका। point, he सर should आवाज नहीं आ see, रहा आपका। आवाज नहीं आ रहा है? नो अब आ रहा है। अब आ रहा है? जैसे क्या फिर से बोलते हो तुम? Point, he should see whether the company has such type of results or not। Sir should check that whether company has He should check that whether company has such type of reserve or not। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, he should see that proper he should see
that proper utilization of made. So Proper utilization utilization. के बाद You should see that proper utilization of such reserve is made. कि अब वो रिजर्व हम जिस पर्पस के लिए बनाए हैं वो उसी पर्पस के लिए यूज होना चाहिए. ठीक है. Guys, the next point. You should see that proper accounting procedure you should see that proper accounting procedure has been followed. Has been followed. Done. Any doubts? Yes, sir. Just give a read. Sir. Complete. तुम लोग क्लास तो 10:50 तक है. टाइमिंग क्या है क्लास का एक बार बताना मुझे. 10 to 11. 11. ओके. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए. शेयर सर्टिफिकेट. Share certificate. Now, what is share certificate? What is share certificate? क्या होता है किसी को पता है? It is a certificate given by a broker, by a company, through broker by a company, For what? for buying his company shares. सर शेयर परचेज Very good. करने के टाइम पे जो भी उसको हाँ. डॉक्यूमेंट पेज मिलता है और शेयर होल्डर को वो शेयर सर्टिफिकेट कहलाता है. Very good. और कोई? अब हम बोले जब ये शेयर हाँ, जब ये बोलो. खरीदा जाएगा शेयर होल्डर के द्वारा तब उसे शेयर अभी you are not audible. अभी प्रूफ है कि वो शेयर खरीदा You है. are not. ठीक है. मतलब बात वही है. You all are right. That's a share certificate issued by the company to the member in lieu of the share purchased by them. तो मेंबर जो शेयर खरीदते हैं सर उसके बदले में उसके एवज में जो सर्टिफिकेट उनको मिलता है दैट इज नोन एज शेयर सर्टिफिकेट जो कंटेन करता है उनका नाम, नंबर ऑफ शेयर, सीरियल नंबर, एवरीथिंग. ठीक है सर. राइट. शेयर सर्टिफिकेट is given to the members in lieu of the shares issued to them by the company.
renew the shares issued to them by the company or the shares purchased by them or the shares purchased by them. ठीक है, लिखो पैराग्राफ करके. The share certificate is issued to the members within 2 months of the transfer of share. एक मिनट रुक जा just wait. Share certificate issued to the members within 3 months of allotment of shares. Within 3 months of allotment of shares and within 2 months of transfer. शेयर अलॉट होने से 3 महीने के अंदर अंदर, या आप जब उसके पैसे को आप कैपिटल ट्रांसफर करो तो उससे 2 मंथ के अंदर अंदर उस आदमी को सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए. और अगर कंपनी लेट करती है सर, देन इन दैट केस कंपनी को पेनाल्टी लगेगा. ठीक है, दैट इज 500 पर डे, जितना लेट होगा. ठीक है, मतलब गिवन टाइम पे जितना ज्यादा लेट करेगी कंपनी को पर डे ₹500 का फाइन पेमेंट करना पड़ेगा. तो लिख लो इस पॉइंट को. The authority avoiding the rule is charged. सर क्या बोले? The authority avoiding the rule is charged a fine of ₹500. A fine of ₹500 per day. रोज दिन. डन. कोई डाउट इसमें? नो सर. तो नेक्स्ट लिखिए इसका ऑडिटर्स ड्यूटी क्या क्या है सर. What सर are कल the के लिए duty of? रहने दीजिए. मेरी मैसेज खत्म कर देते ना. कल कौन देखा है? कल तुम देखा है क्या? अजीत बोल रहा था कल हम नहीं देखते हैं. ठीक है, सर देखें ये मूवी देखें हम. कौन सा? सर कल ही तो है सर, चपा कल भी होता है कल. कल हो ना हो. चल लिख ऑडिटर्स ड्यूटी, छोटा पॉइंट है, लिख लो. अच्छा ठीक है चलो.